Chapter 10 Circles, Session 1. Let's start. So let's start with the definition. The collection of all the points in a plan, the collection of all the points in a plan which are fixed distance from a fixed point in a plan is called the circle. That means यहाँ पर कोई एक पॉइंट है और यहाँ पर से ये सारे के सारे एक फिक्स डिस्टेंस पर आए हुए हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम सर्कल. Okay, a fixed point is called the center and the fixed distance is called the radius of a circle. See, this is the fixed point. This is called the center of the circle. See, a fixed point means this is the fixed point and it is called the center. Now, a fixed distance is called the radius. So this fixed distance is called the radius and this makes the circle. Okay. So this is going to be the radius. So in that way, the circle is produced. Now, a circle divides the plan into which lies into the three parts. Inside the circle is called the interior part of the circle. Then the circle itself. But ये क्या था? थोड़ा सा देखो. This is the external part of the circle. Right, this is the internal part of the circle and the circle itself. Okay, once again, external part of the circle, internal part of the circle and the circle itself. So this is the external part of the circle. This is the external part of the circle and the outside of the circle, that means the external part of the circle and the circle itself. तो अभी देखो ब्लू कलर का हो गया पूरा का पूरा circle itself. Okay, so that's three parts की सर्कल प्लान को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? तो तीन पार्ट में. एक तो बाहर का आउटसाइड, एक तो इनसाइड एंड द सर्कल इटसेल्फ. Okay, then the circle, this is the center O. So now what PQ is called? See, it is not passes through the center. It is just a line which touches the circle at the two different points. So this line is called the chord of the circle. क्या बोलेंगे उसको? Chord of the circle. Now, this AB, right, this is passes through the center is called the diameter. This is called the diameter. And once more thing that you can tell this AB, and that is the largest chord of the circle. AB is the largest chord of the circle, right? So PQ is called the chord, AB is called the diameter, and diameter is the largest chord of the circle. So PQ is called the chord of the circle. The chord which passes through the center of the circle is called the diameter of the circle. Hence, the diameter is the largest or the longest chord. And all the diameters have the same length, which is equal to the 2 times of the radius. What does it mean? Means diameter is equals to 2 times the radius. This is simple. This is R. This is also R. Now if I can add AO plus OB, it is going to be the AB. So AB is going to be the R plus R. It is going to be the 2R. Now this is the circle, center, and this is the minor arc. See, अगर ये दोनों पॉइंट से मैंने एक आर्क ड्रॉ की है, so this is called the minor arc. So this PQ is called the minor arc, and which is written as a PQ, और ऊपर से ऐसा आर्क बनाना है, right? So this is the called minor arc PQ, and then this is the PQR, and PQR is the major arc. So PRQ is the major arc, right? So here we have the two PQ called the minor arc and PRQ is called the major arc. If it is just tell that arc PQ, if it is just tell the arc PQ, it is by default a minor arc, but if it is asked that minor arc PQ, then it is also minor arc, but for the major arc they must have to tell whether it is a major arc or not. So if it is say that major arc PRQ, major arc, then it is the major arc, but if it is just tell that the PRQ, arc PRQ, then it is the minor arc. If there is nothing is mentioned, then it is by default the minor arc,
minor arc. So a piece of a circle between the 2 points is called the arc. So this is the piece of a circle. It is just a piece of a circle between the 2 points is called the arc. Look the pieces of P and Q makes. You can find out the two pieces. The longer piece is called the major arc PQ. That means it's PRQ. And the shorter one is called the minor arc PQ. So the minor arc PQ is denoted by the PQ and major arc PQ is denoted by the. So just don't consider these symbols. The symbols is in that way. So this is the right. It is the curvature, right? Yes, it is some spaces it cannot seen properly, but it is just an arc. Unless and otherwise it is stated arc PQ, right? PQ stands for the minor arc. If there is nothing is mentioned, then it is by default the minor arc. When P and Q ends the diameter, see, क्या है कि ये P and Q यहाँ पर आ गए और ये diameter बन गए, तो जो ये पोर्शन बनेगा वो क्या होगा भाई? हमारा सेमी सर्कल होगा. क्या होगा? सेमी सर्कल. ये सेमी आर्क होगा. क्या होगा? राइट. सो इट इज कॉल्ड द सेमी सर्कल. राइट. अगर यहाँ से मैं अगर ये ड्रॉ करूँ, ये P और Q यहाँ पर आ गए, दिस इज P एंड दिस इज Q, सो दिस बिकम्स द सेमी सर्कल. This is the circle. This is the code PQ. Now you can one thing observe. अगर ये कोड और ये जो रीजन बाउंड हो रहा है और ये जो रीजन बाउंड हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेगमेंट. क्या बोलेंगे? सेगमेंट. बट इट इज अ माइनर सेगमेंट. छोटे वाले को माइनर, बड़े वाले को मेजर सेगमेंट. माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट. दिस इज द माइनर सेगमेंट and this is the major segment. But if it is nothing is mentioned, right, if nothing is mentioned, then we have to consider it is a minor segment. See, ये segment और दूसरा है sector, तो सारी की सारी चीज़ें 10th में बहुत यूज होने वाली है, तो ज़रा ध्यान रखना. right, the region between the chord and either arc is called the segment. ये माइनर आर्क है और ये कोड है, तो ये जो रीजन बाउंड करेगा उसको क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट. ये कोड है और ये सेगमेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट. सिमिलरली द रेडियस एंड द माइनर सेक्टर एंड द मेजर सेक्टर. तो रेडियस के थ्रू बनता है. लुक, वी विल टाइप ऑफ द मेजर सेगमेंट एंड द माइनर सेगमेंट. नाउ लेट्स सी द कोड. See, you can just consider here, this is the minor arc, so this is the O, this is the P and this is the Q. So OP is the radius, OQ is the radius. So the region bounded by the arc and the radius is called the minor segment and the major sector. Right? Minor sector and the major sector. Now 10.1, in 10.1 fill in the blanks. The circle, center of a circle lies inside or exterior or interior of a circle. It is very simple. It is the interior of a circle. क्योंकि center कहाँ पर होता है? अंदर की साइड होता है. So answer is interior. A point whose distance from the center, the point whose, can you, okay, a point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies, greater than its radius. तो रेडियस से ज्यादा अगर हो तो कहां पर लाइज करेगा? आउटसाइड ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. राइट. सो आंसर इज एक्सटीरियर. एंड द लॉन्गेस्ट chord of the circle is called the diameter. An arc is blank when its ends are the ends of diameter. कोई एक आर्क है, आर्क के एंड अगर डायमीटर के एंड से हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको? सेमी सर्कल. क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल. देन segment of a circle is a region between the arc and the chord of the circle. See, पूछा क्या है भाई? सेगमेंट. तो सेगमेंट तो पता ही है कि इसको सेगमेंट बोलते हैं. तो क्या बोला है कि आर्क, आर्क तो दे ही दिया है. आर्क और दूसरा क्या आएगा भाई? कोड. तो आर्क एंड कोड के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? सेगमेंट. कोड आएगा. राइट. तो द सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? सॉरी,
A circle divides the plan on which it is lies in the how many parts? सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? एक अंदर का, एक बाहर का और एक सर्कल खुद, तो मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करता है उसको 3 पार्ट्स में. ओके, नाउ ट्रू और फॉल्स. A line segment joining the center to any point of the circle is called the radius. True. See, a line segment joining the center. अब ये सेंटर है, अब सेंटर से मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूँ, ये सारी की सारी क्या होने वाली है? रेडियस ही होने वाली है. तो स्टेटमेंट इज ट्रू. A circle has finite number of equal chords. अब ये सर्कल है भाई, ये कोड, ये दूसरी कोड, ये तीसरी कोड, ये चौथी कोड, ये पांचवी कोड, ये छठी कोड, ये सातवीं कोड, तो मैं तो कितनी भी कोड ड्रॉ कर सकता हूँ ना यहाँ पे. देयर इज इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ कोड्स आर अवेलेबल. द स्टेटमेंट इज फॉल्स. द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स. सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट. देखने से पता चलता है कि भाई 3 तो कहीं पे आया ही नहीं है, हमारे पास अवेलेबिलिटी सिर्फ 2 की ही है. A chord of a circle which is twice as long as its radius, twice as long as its radius, is called the diameter of the circle. So the statement is true. A sector is a region between the chord and its corresponding arc. The sector, अब सेक्टर का मतलब क्या है कि भाई ये रेडियस एंड आर्क, इसके बीच के रीजन को हम सेक्टर बोलेंगे. सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड. तो कोड तो नहीं आता भाई, आता क्या है? तो रेडियस आता है. तो कोड और आर्क के बीच में क्या बोलेंगे? सेगमेंट बोलेंगे. तो ये सेगमेंट नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? सेक्टर. दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स. द स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी दी फॉल्स, राइट. सो दैट्स इट फॉर टुडे. वी विल मीट इनटू द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन बाय बाय. एंड थोड़ा सा इजी चैप्टर है तो थोड़ा सा ध्यान दे दो, राइट. थैंक यू.